is Peter Sizov. I'm counselor and a press secretary of the Russian embassy, and I've been very honored to present here today because actually the collection is very high class, and I'm staying right here exactly because of this nice painting. It's made in classic manner, and it reminds me of my motherland because I do really love India and the climate and all the things, but I really miss snow. I haven't seen a Russian snow for 2 years already. Here you can see the technique of Indian artist, but it's classical Russian approach because we do love, Russians, Indian painters because they are so bright, they're so energetic, and here you see how does the Russian winter looks like. Not everyone can understand it. On one hand, it's boring, the days are very short, the level of snow is so high. But for me, spending half of my life abroad being a diplomat, it reminds me of Russia. And I'm so impressed that Indian by soul can be Russian by painting. And moreover, I'd like to add that this year there are too many brilliant examples of painting, graphics, and some installations. I wish this practice can be going on. And thank you very much for organizers. This small Russian village, a small church. Nowadays, the population is coming out from villages to big cities like in India. And here, like when it was a house, all the animals, all the equipment was like in a separate house, but being all together. And sometimes you see there's a field. Sometimes there is something like a lake, and you can come and reach this village, for instance, just half of a year, because half of a year the snow is like, as I told you, and sometimes in summertime when it rains, it's mud and it's even impossible to come. There are some districts like that in India, and really, and of course, Rorik portrait. Rorik, he was actually, I think, he made for diplomacy much more than all we did, because it was people-to-people diplomacy. And this Russian person, he was a scientist, he was a traveler, he was like, I don't know, it's easy to say whom he wasn't being and what he didn't do. He just discovered the Indian soul to us, to Russians. Last year we celebrated 150 years since his birthday, so Rorik is like in the heart of every Russian. Thank you. My name is and I'm very happy to present my old college time works made in the early 90 years. These are watercolors and gouaches, and these are my academic works. I studied from Russia, from prestigious Academy of Fine Arts named after Surikov, a great Russian painter, and I spent 7 years studying there, and these are my college time works. So these are study works, as you can see. So there are still lifes and the works done on the spot at various places. Thank you so much. नमस्कार, मेरा नाम अभय के है और मैं एक लेखक, चित्रकार और राजनयिक हूँ। आज जो है ये प्रदर्शनी है जो रूस और भारत के बीच में कैसे रूस को भारत की नज़र से देखते हैं वो है। और आप इस बैकग्राउंड में आप मेरी 4 पेंटिंग्स देख सकते हैं। ये पेंटिंग्स जो हैं वो मैंने रूस में जो है मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग में बनाई हैं। मेरी जो
कला की यात्रा है वो रूस में मॉस्को में शुरू हुई, और इन कलाओं में जो है आप देखेंगे कि सुपरमैटिज्म जो है, काज़िमिर मैलेविच का जो सुपरमैटिज्म है उसका इम्पैक्ट है, लेकिन इसमें इंडियन कलर्स हैं। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये रूस और भारत की जो है एक जॉइंट प्रोडक्शन है। और मैं जो है भारत का कॉन्सुल रहा हूँ वहाँ सेंट पीटर्सबर्ग में, जहाँ की मैंने बहुत सारे रूसी आर्टिस्टों के साथ, कलाकारों के साथ, चित्रकारों के साथ जो है समय बिताया, उनके साथ पेंटिंग्स की। और आप देख सकते हैं ये 4 पेंटिंग है। 2010 में मैंने ये चित्र बनाई थी, और ये जो है एक चित्र जो है वो 20वीं शताब्दी को दर्शाता है, जबकि दूसरा जो है एक धरती के लिए एक मॉन्यूमेंट है, तीसरा जो है वो एक बायो रोबोट है, और चौथा जो है वो एक तरह से 3 वाइज मैन को दिखाता है, और 3 बुक्स भी हैं उसमें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सिद्धार्थ हूँ एंड मैं यहाँ पे अपनी फ़ोटोग्राफी की वजह से आया हूँ। मैं रशिया 3-4 बार जा चुका हूँ एंड हर बार मैं जाके फ़ोटोग्राफी देखता हूँ एंड खींचने की कोशिश करता हूँ। मैं सिर्फ मॉस्को नहीं, मैं और शहरों में जा चुका हूँ, जो है कज़ान, कलिनिनग्राड, जहाँ पे जनरली टूरिस्ट जाता नहीं। और हर बार हर मौसम की फ़ोटो है मेरे पास। ये बर्फ़ की भी है एंड वहाँ पे गर्मियों की भी है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है हमेशा एंड और भी जाते रहूँगा मैं, और खींचते रहूँगा। थैंक यू।